See what is critical velocity of satellite. Critical velocity of satellite is nothing but a minimum amount of horizontal velocity, given to satellite so that it revolves in circular orbit around the earth. So what happens if horizontal velocity of different values are given to satellite? 4 to 5 different cases we have studied. Out of that 4 to 5 cases, only one case is important. If satellite is orbiting in circular form around the earth, then that condition is essential for the successful launching of satellite. So for this circular orbit, how much amount of minimum velocity it is given to the satellite, that is called as critical velocity. So suppose this is earth having mass m, radius r, and satellite having particular height h from earth surface. The mass of satellite is small m, and here we have given a particular amount of horizontal velocity to the satellite so that it revolves in this circular orbit around the earth, and this is the successful launching of satellite where it revolves in circular orbit around the earth. The radius of orbit, it becomes r plus h. So what will be the formula for critical velocity? In this condition, this is orbiting object and this is the center of earth. The radius of this orbit becomes r plus h, and in this successful circular motion, centripetal force, it is balanced by gravitational force between earth and satellite. This is the required condition. Centripetal force, it is exactly balanced by gravitational force. So formula for centripetal force, mv square upon r, mv square upon r, small r. So here instead of v, I will say vc, critical velocity, because satellite is orbiting with this much amount of velocity, critical velocity, and gravitational force is gmm upon r square, small r. So substitute value of small r as r plus h, and mm cancel. What do we get? Vc square r plus h gm upon r plus h whole square. 1 r plus h cancel. Vc square is equal to gm upon r plus h. Therefore Vc is equal to under root gm upon r plus h. This is formula for critical velocity in terms of capital G, universal gravitational constant. Now we can convert this in small g also. How? We know that small g is nothing but gm upon r square. So here r plus h square, actually it is gh. This is condition from the previous theory, small g is equal to gm upon r square. So at this point acceleration due to gravity is gh, and that gh is given by this formula, gh is equal to gm upon r plus h whole square. So we can substitute gm is equal to gh r plus h whole square in this equation. What do we get? Vc is equal to under root gh r plus h whole square upon r plus h. 1 r plus h cancel. We get Vc is equal to under root gh in bracket r plus h. This is formula for critical velocity in terms of small g, and this is formula for critical velocity in terms of capital G. Types of satellite. सैटेलाइट दो तरह के होते हैं,
एक होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, वन इज कम्युनिकेशन एंड अदर वन इज पोलार सैटेलाइट. सो कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होता है? इट इज अ पर्टिकुलर सैटेलाइट which is also called as geostationary satellite. Geostationary, as the name suggests, ये सैटेलाइट जिस जगह पर लॉन्च होता है, जिस जगह पर फिक्स किया जाता है, वो उसी ही जगह पर रहता है. एक्चुअली इट इज रोटेटिंग अराउंड द अर्थ, but its period of rotation, remember for geostationary satellite the period of rotation is 24 hour. मान लो ये अर्थ है, ये इक्वेटर, ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है, दे आर फिक्स इन इक्वेटोरियल प्लेन. दिस इज इंपॉर्टेंट. ये सैटेलाइट हमेशा इक्वेटोरियल प्लेन में फिक्स किए जाते हैं. सपोज यहां पर ये सैटेलाइट फिक्स किया गया. वी नो दैट अर्थ इज रिवॉल्विंग अबाउट इट्स एक्सिस एंड द पीरियड ऑफ अर्थ इज 24 आवर. 24 आवर में एक रोटेशन ये अपने आप में करती है. एट द सेम टाइम दिस सैटेलाइट विच इज फिक्स इन इक्वेटोरियल प्लेन, इट ऑल्सो रोटेट, इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन इज 24 आवर. तो ये जहां पर है वहीं पर हमेशा रहता है ऐसा हमको लगता है, बट इट इज एक्चुअली रिलेटिव मोशन. अर्थ रोटेट होती है और सैटेलाइट भी रोटेट होता है एंड बोथ हैविंग सेम पीरियड. देयरफॉर इट इज जस्ट लाइक अ फिक्स्ड, देयरफॉर इट्स नेम इज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट. द हाइट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इट इज ग्रेटर, इट इज नियर अबाउट 3600 किलोमीटर, सॉरी 36,000 किलोमीटर, इतनी इसकी हाइट होती है. और ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है. देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन सैटेलाइट. जो सेकंड टाइप है पोलार सैटेलाइट. सबसे पहली बात तो पोलार सैटेलाइट ये पोलार रीजन में फिक्स होता है. इट इज नॉट इन इक्वेटोरियल प्लेन, इट इज इन पोलार प्लेन. इट इज फिक्स इन पोलार प्लेन, नॉर्थ साउथ पोलार प्लेन. सेकेंडली पोलार सैटेलाइट की जो हाइट होती है नियर अबाउट 800 किलोमीटर, 500 से 800. पीरियड ऑफ पोलार सैटेलाइट, ये जो पीरियड होता है पोलार सैटेलाइट का, ये कंपैरेटिवली कम्युनिकेशन सैटेलाइट से बहुत कम होता है. द पीरियड ऑफ पोलार सैटेलाइट इज नियर अबाउट 85 मिनट, वेरी लेस. That means approximately it can rotate around the earth 16 times per day. एक दिन में ये 16 बार अर्थ के चक्कर लगाता है. So this is the period of polar satellite. Then it is used for weather forecasting, then mapping, for astronomical purpose. So this is the polar satellite having various uses, military purpose also. So this is the basic difference between communication satellite and polar satellite.